Blood evokes lots of thoughts, from tiny paper cuts to major injuries. Spilling that red liquid is almost never a good thing. That's because blood helps us move nutrients and waste around the body, as well as regulate our pH level and prevent infections. In fact, some components of blood help prevent the loss of blood during an injury. The components of blood can be separated out by simply spinning the blood in a centrifuge, a machine that whips a vial of blood in a circle over and over, really fast. This is kind of like what happens to clothes in a washing machine. When blood is centrifuged, the heaviest blood components move to the bottom, and the lightest ones move to the top. Overall, 3 distinct layers form: the erythrocytes, or red blood cells, at the bottom, the buffy coat, which contains platelets and immune cells, in the middle, and then the plasma on the top. So, starting at the bottom of the tube, there's the large layer that makes up approximately 45% of the total blood volume, which again is made up of erythrocytes. This value is called the hematocrit. A decreased hematocrit means that there are too few erythrocytes, either because they're not being made or because they're being destroyed. On the other hand, an increased hematocrit can be due to dehydration, because if there's less liquid in the blood, then the portion taken up by the erythrocytes would rise. Alternatively, there might simply be too many erythrocytes being made, which can happen in some diseases. Now, the main function of erythrocytes is to carry oxygen to the tissues, as well as bring carbon dioxide to the lungs so it can be expired. Erythrocytes are shaped like thin biconcave discs, meaning they have a depressed center which makes them flexible enough to fit through even the smallest blood vessels. This shape also increases their surface area, which helps them conduct gas exchange efficiently. Erythrocytes lack organelles like the nucleus, which creates even more room for hemoglobin proteins which carry oxygen. While red blood cells are fantastic for gas exchange, the fact that they don't have any organelles means that they only live for about 120 days. So red blood cells are always being regenerated in the bone marrow. The thin white middle layer just above the erythrocytes is called the buffy coat, and it contains platelets and leukocytes, or white blood cells. This layer generally accounts for less than 1% of the volume of whole blood, with most of the volume being taken up by the leukocytes. Now, platelets are small pieces that split off of larger cells called megakaryocytes in the bone marrow. The main role of platelets is to clump together and form a plug that helps seal off a damaged blood vessel and prevent blood loss. And then there are the leukocytes, which are the only complete cells in blood, meaning they have all the usual organelles. There are lots of different types of leukocytes, and they all help to ward off pathogens like bacteria and viruses, as well as destroy cancerous cells and neutralize toxins. Some leukocytes are called granulocytes, because they contain tiny sacs called granules that are filled with inflammatory molecules. Neutrophils are the most common granulocyte, making up about 60% of the leukocytes, and these are usually the first to respond to an infection. Other granulocytes include eosinophils and basophils, but these only make up about 2 to 5% of leukocytes. Eosinophils are largely responsible for fighting off parasitic infections, while basophils are key in allergic reactions. Leukocytes that don't have granules include lymphocytes and monocytes. Lymphocytes include B cells, T cells, and natural killer cells, and make up about 35% of leukocytes.
Lymphocytes are responsible for the adaptive immune response, which includes antibody production and is what allows our immune system to have memory, so that we can effectively respond to pathogens that have caused infections in the past. Lastly, there are the monocytes, which make up about 5% of the leukocytes. And these cells help gobble up bacteria or other pathogens via phagocytosis. Unlike the other blood components, leukocytes have the ability to leave the blood and enter the tissues using a process called diapedesis, which is where they slip in between endothelial cells that line the blood vessels. In a way, leukocytes are like a mobile army, utilizing the blood as a highway to get to different areas of the body. Now, the top layer contains plasma, which makes up approximately 55% of whole blood and is acellular, meaning it has no cells. About 90% of the plasma is water, and the rest is composed of proteins, electrolytes, and dissolved gases. The most abundant protein found in blood is albumin. Albumin is made in the liver, and it helps maintain oncotic pressure, which is the force that helps to keep water in the bloodstream. In addition, albumin is a transport protein. It shuttles fatty acids, calcium, lipid-soluble hormones, and even some medications around the body. Another group of plasma proteins are globulins, which include gamma globulins, which are antibodies that stick to pathogens and label them for destruction, as well as alpha and beta globulins, which transport fats, metal ions, and fat-soluble vitamins. Fibrinogen is another abundant plasma protein, and it's involved in clot formation for damaged vessels. Fibrinogen helps platelets attach to one another to form the initial platelet plug. And then other clotting factor proteins that are also in the plasma come along to stabilize the clot. All of these clotting factor proteins, including fibrinogen, can be removed from a sample of plasma. And when that happens, what remains is called serum. The electrolytes that are found in the plasma include mainly sodium, potassium, calcium, bicarbonate, and chloride. These electrolytes play vital roles in maintaining normal acid-base physiology in the blood, and help regulate blood osmolarity, which is the overall concentration of the blood. Other solutes in the plasma include hormones, nutrients like glucose, and respiratory gases like oxygen and carbon dioxide that are dissolved in the blood. Alright, as a quick recap. The blood is made up of about 45% erythrocytes, 55% plasma, which is mostly water but also contains proteins like albumin, electrolytes, and dissolved gases, and less than 1% is made up of platelets and leukocytes. हेलो एवरीवन, आज के इस हाई एनर्जी सेशन में हम ब्लड कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव राइट इन। अभी हमने ब्लड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और एक एक करके उन्हें डिकोड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट फॉर्म्स ब्लड क्लॉट। इसका राइट आंसर है फाइब्रिनोजन। ये एसेंशियली ब्लड प्लाज्मा में एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो ब्लड कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इंजरी होती है तो ब्लीडिंग को रोकने का मेन काम इसी प्रोटीन का होता है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट वन, द ल्यूकोसाइट्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। इसका आंसर है इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये वो स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर हमारी बॉडी के प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। मूविंग ऑन, पिगमेंट दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। राइट, इट्स हीमोग्लोबिन। ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट एक आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। बेसिकली इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ये हमारी पूरी बॉडी में वाइटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, विच इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड सेल्स विद पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। आंसर है न्यूट्रोफिल्स। अब इस वर्ड पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? इट जस्ट मीन्स हैविंग अ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है, इसीलिए इन्हें ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया है। All right, let's look at another one. Blood cells associated with phagocytosis. इस कैटेगरी में 3 मेन सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। फैगोसाइटोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें ये सेल्स हार्मफुल पैथोजेंस को कंप्लीटली एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लाइक अ बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, ल्यूकोसाइट्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। The answer is B lymphocytes। याद रखिएगा, ये वो स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। थोड़ी और डिटेल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन आरबीसीज? आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, और इसका रीजन बहुत लॉजिकल है, ताकि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा खाली स्पेस बचे और वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इससे ही जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इनका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले आना। ये इन एरिथ्रोसाइट्स का सबसे फंडामेंटल पर्पस है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड? एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में ये रेंज 150,000 से लेकर 450,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होती है। ये काउंट एक्चुअली बहुत मैसिव है, बट नेसेसरी भी है, क्योंकि इंजरी के टाइम पर फास्ट और इफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग के लिए इतने हाई प्लेटलेट काउंट का होना बिल्कुल जरूरी है। अब इन दो सिमिलर क्वेश्चंस को एक साथ समझते हैं। Which gas interferes with the transport of oxygen by RBCs, and which gas has an affinity with hemoglobin more than that of oxygen? The interesting part here is कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ड्रास्टिकली हाई होती है, इसीलिए ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में नेचुरली इंटरफेयर करता है, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर अस। वी आर ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the chemical nature of antibodies? Antibodies chemical नेचर में बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। स्पेसिफिकली हम इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेडर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कस्टम बिल्ड किए जाते हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन, व्हाई इज स्प्लीन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? देखिए, स्प्लीन का प्राइमरी फंक्शन ही पुराने और डैमेज रेड ब्लड सेल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। जरा सोचिए, अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट पर हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बन रहे हैं, जबकि मिलियंस पुराने सेल्स कंटिन्यूअसली स्प्लीन में डिसमेंटल हो रहे हैं एक नॉन स्टॉप माइक्रोस्कोपिक लाइफ साइकिल में। द ह्यूमन बॉडी इज लिटरली अ परफेक्टली बैलेंस्ड मशीन, है ना? इस प्रोसेस पर जरूर सोचिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Do you remember tripping over as a kid and cutting your knee? And then magically the bleeding suddenly stops? Or have you ever wondered why this happens? Our body is very clever and produces substances to seal off the open wound. In this video, we are going to look at how and why blood clots. Clotting prevents us from bleeding to death and also protects us from nasty disease-causing organisms called pathogens entering our body. When we injure ourselves, we can damage the blood vessels just below our skin. This can cause blood to either leak into our tissue and form a bruise, or if the skin is broken, to openly bleed. To prevent these horrible things happening, blood clotting occurs. So let's have a look at how this happens. Starting with platelets. These are tiny cell fragments that float around in our blood. When a blood vessel is damaged, collagen is exposed. This collagen exposure attracts platelets to the injured area. The platelets then stick together to form a plug. They've quickly built a barrier that stops us from losing too much blood. However, this platelet plug isn't that strong, so it needs to be made stronger. A protein called fibrin does exactly that. In our blood, there are soluble fibrinogen proteins. At a wound,
These soluble fibrinogen proteins are exposed to outside chemicals that aren't normally found in blood vessels. Like with the collagen and platelets, this exposure causes the fibrinogen proteins to turn into sticky fibrin fibers. The fibrin fibers form a mesh, holding all the platelets together and making a much stronger clot. More platelets, red blood cells, and other components in our blood all get stuck to the mesh, making it even stronger. This clot stops more blood escaping the body, and also prevents nasty pathogens entering our body from the outside. The clot develops into a scab, which protects the wound as it heals, and new layers of skin form underneath. So really, all a scab is just platelets trapped in the fibrin mesh. It is like putting a plug in a sink. When the new skin is fully formed, the scab will fall off, revealing the lovely brand new skin underneath. A final thing to note, remember that I said the exposure to the collagen causes the platelets to stick together, and the exposure to the outside chemicals causes the fibrinogen to turn into sticky fibrin. Both the platelets and the fibrin only become sticky after the exposure. This means in a normal, healthy blood vessel, they won't randomly cause clots. So from this video, you should understand the magic of blood clotting. Platelets are first to the scene, closely followed by the fibrin fibers. Our blood clots so that we don't lose a lot of blood, and don't let lots of nasty pathogens into our body if we cut ourselves. We have learned about blood clotting. Now we are going to study some more amazing facts about this. Okay, let's dive into this. Amazing blood clotting facts. To really appreciate how remarkable our circulatory system is, just think about what happens when you get a simple paper cut. I mean, your body instantly springs into action. A clot isn't just some biological patch. It actually serves two vital, life-saving roles. First off, it acts as a physical plug to just stop the bleeding. But just as importantly, it works as a shield, preventing any harmful germs from entering your body right through that cut. It's literally your body's essential first line of defense. So the crucial point is, what exactly happens when this natural defense mechanism is just genetically absent? Well, that brings us to hemophilia, which is often known as bleeder's disease. This is a hereditary disorder where the blood simply fails to clot like it's supposed to. And interestingly enough, it usually affects males. Without the ability to form that protective seal, even a super minor injury becomes incredibly dangerous. Now, behind the scenes, there are some very specific ingredients needed to make healthy clotting actually happen. You probably know vitamin K from your daily diet, right? But functionally speaking, vitamin K is absolutely essential for the formation of something called prothrombin. Prothrombin is basically the foundational building block for the entire clotting process. If you don't have enough vitamin K, that whole chain reaction just kind of falls apart. But here is where medical science gets really clever. As our source material highlights, we can actually hack this natural system. When we need to store blood in blood banks, we obviously don't want it to clot in the bag, so medical professionals add specific chemicals, namely sodium oxalate or sodium citrate. By adding these directly to the stored blood, we put a total pause on the clotting process. This keeps the blood perfectly fluid until it's needed for a life-saving transfusion. Those chemicals used in blood banks are actually perfect real-world examples of anticoagulants. By definition, anticoagulants are simply substances which, when mixed with blood, prevent its clotting. It's just a brilliant application of chemistry to control our biology, basically holding the body's natural defenses at bay until we actually need them. When clots cause trouble. This powerful thickening mechanism isn't always our friend, though. There's definitely a darker side when it activates at the wrong time. Now, what's really interesting about this slide is how it compares two major internal roadblocks: coronary thrombosis and embolism. Coronary thrombosis happens when a clot forms and blocks a coronary artery,
or one of its branches, right there in the heart. This stationary roadblock basically suffocates the heart muscles because they aren't getting any blood, causing severe pain and resulting in a heart attack. On the flip side, an embolism involves a traveler. When a blood clot, known as a thrombus, breaks free and is transported through the bloodstream, it becomes what we call an embolus. An embolism happens when this traveling embolus finally lodges in a blood vessel somewhere else, completely cutting off circulation to that specific area. And the consequences? Well, they depend entirely on where that clot gets stuck. If a clot blocks the blood vessels supplying the brain, it causes a stroke. The brain's vital supply chain is suddenly severed, which is exactly why strokes happen so incredibly fast and have such severe consequences. It's crazy to think that the very mechanism designed to save us from a scraped knee can turn fatal if it triggers in the wrong place. Why blood stays fluid? Which naturally leads us to the ultimate biological mystery. If our blood is so incredibly good at clotting, and internal clots are so exceptionally dangerous, I want you to really think about this question for a second. Why doesn't our blood just clot inside us all the time during normal circulation? I mean, you have gallons of this fluid constantly rushing through thousands of miles of microscopic vessels inside you right now. So why does it stay perfectly liquid? The answer is your body's built-in superhero, heparin. Heparin is an internal anticoagulant that's naturally present right there in your blood, and it's produced by specific white blood cells called basophils. This amazing substance is just constantly working behind the scenes, patrolling your bloodstream to fight off unwanted clots before they can even form. And this brilliantly illustrates exactly how heparin gets the job done. It's not just some simple chemical block. It attacks the coagulation process on 3 distinct fronts to keep your blood safely liquid. First step, it actively prevents the formation of thrombin from prothrombin, essentially stopping the chain reaction before it even starts. Second, if any thrombin does manage to form, heparin neutralizes its action right away. And third, it actively combines with fibrinogen to keep it from turning into a solid web. It is a highly sophisticated, multi-layered defense against internal clotting. Let's move to and see how this builds upon the physical structure of your circulatory system itself. Because it's not just chemical, right? It's mechanical. Your blood stays fluid because the coagulating factors remain entirely inactive as long as the blood is flowing through closed vessels and isn't exposed to the outside air. Furthermore, the intact, healthy skin lining the inside of your capillaries and blood vessels, which is called the epithelium, doesn't release thromboplastin. Essentially, as long as the internal pipes aren't broken, the chemical alarm for a clot is never pulled. It really all comes down to this delicate balance of life. Your body is running a continuous, highly complex biological calculation every single day. It knows exactly when to unleash a life-saving clot to seal a wound, and it knows exactly how to keep the riffers of your bloodstream flowing freely to keep you alive. How absolutely amazing is it that all of this happens automatically every single second of your life? It truly makes you wonder what other incredible systems are quietly keeping us alive right under our noses. Keep exploring, keep learning, and thanks so much for joining me in this explainer. All right, let's dive straight into this explainer and tackle the actual mechanics of blood clotting. It's this genuinely fascinating, life-saving biological process that keeps us alive every single day. Yet we literally never think about it until we get a sudden paper cut or a scraped knee. So today we're going to unpack exactly how our bodies stop bleeding, and we'll see how a seemingly simple event is actually an absolute masterclass in emergency response. To do this, we're going to look directly at the source material, which gives us a concept check featuring 5 core questions. We're going to go through these line by line, reading the question and then breaking down the answer to build a complete picture of this incredible biological defense system. What initiates clotting of blood? When there's a physical breach in your blood vessel walls,
something has to immediately sound the alarm, right? What is that crucial initial trigger? The answer is platelets. These are tiny, incredibly active, disc-shaped cell fragments that are constantly circulating in massive volumes throughout your bloodstream. Think of them as your body's ultimate first responders. The absolute second a blood vessel is damaged, millions of these platelets rapidly rush to the exact site of the injury. And by rapidly clumping together right there at the microscopic wound site, they trigger what we call the clotting cascade. It's the critical spark that initiates the entire beautifully complex process of stopping the bleed. In which genetic disorder does blood fail to coagulate? This question asks us to look at what happens when that emergency response system we just talked about is fundamentally altered from birth, specifically because of a person's genetics. That condition is called hemophilia. In folks living with this genetic disorder, the blood just doesn't clot as it normally would, simply because the body is missing specific, highly essential clotting factors. Remember, that clotting cascade is exactly that, a super delicate, sequential chain reaction. Because of how interconnected this biological machinery is, missing just a single link in that chain brings the entire life-saving process to a grinding halt. It means even a really minor injury or an internal bump can quickly become a highly serious situation. It really highlights just how meticulously balanced our internal systems need to be. How is loss of blood prevented from a bleeding wound? Now we're zooming out a bit. We know platelets act as the initial spark, but what are the actual physiological actions the body takes to physically ensure your blood stays safely inside your veins? The body uses a highly coordinated defense. It kicks off with vasoconstriction, where the blood vessels themselves physically constrict, dynamically narrowing down to restrict the blood flow to the damaged area. Next up, a temporary platelet plug forms as those millions of first responders stick tightly to the damaged tissue. And finally, a sturdy fibrin clot completely seals the deal. Fibrin acts just like a microscopic, impenetrable biological net. It literally weaves across the opening, catching red blood cells and fully sealing the wound tight until the surrounding tissue can completely heal and regenerate over the next few days. Which vitamin is essential for clotting? Believe it or not, our bodies actually need outside resources to fuel these internal mechanisms. So, which specific nutrient from our diet plays the starring role here? The exact answer is vitamin K. Your liver relies heavily on vitamin K to actually produce the vital proteins required for those exact clotting maneuvers we just discussed. Without enough vitamin K in your system, your liver simply cannot manufacture the chemical tools needed to build that sturdy fibrin net. It's just a fascinating reminder of how a balanced diet directly and quite literally impacts your body's most critical emergency response systems. The nutrients you consume today genuinely become the biological armor protecting you tomorrow. What is prothrombin? We just talked about the liver producing critical proteins with the help of vitamin K. This asks us to pinpoint one of those highly specific components by its exact name. Prothrombin is a crucial plasma protein manufactured by your liver, but its main job is deeply transformative. During an active clotting event, prothrombin converts into an active, highly potent enzyme called thrombin. Thrombin acts as the ultimate chemical glue in this whole biological cascade. It's the precise catalyst that grabs soluble materials floating in your blood and transforms them into those insoluble, tough fibrin threads we mentioned earlier. It effectively binds the whole thing together, stabilizing and finalizing the clot so you can just heal up in peace. And that completely wraps up our line-by-line breakdown of the biological clotting response. We've gone from that initial platelet rush all the way down to the chemical transformation of prothrombin.
But honestly, understanding this incredible multi-step defense system leaves you wondering what other invisible, deeply complex mechanisms are actively keeping you safe at this very moment, working completely silently beneath the surface. It's often said that despite humanity's many conflicts, we all bleed the same blood. It's a nice thought, but not quite accurate. In fact, our blood comes in a few different varieties. Our red blood cells contain a protein called hemoglobin that binds to oxygen, allowing the cells to transport it throughout the body. But they also have another kind of complex protein on the outside of the cell membrane. These proteins, known as antigens, communicate with white blood cells, immune cells that protect against infection. Antigens serve as identifying markers, allowing the immune system to recognize your body's own cells without attacking them as foreign bodies. The two main kinds of antigens, A and B, determine your blood type. But how do we get 4 blood types from only 2 antigens? Well, the antigens are coded for by 3 different alleles, varieties of a particular gene. While the A and B alleles code for A and B antigens, the O allele codes for neither. And because we inherit one copy of each gene from each parent, every individual has 2 alleles determining blood type. When these happen to be different, one overrides the other, depending on their relative dominance. For blood types, the A and B alleles are both dominant, while O is recessive. So A and A gives you type A blood, while B and B gives you type B. If you inherit one of each, the resulting codominance will produce both A and B antigens, which is type AB. The O allele is recessive, so either of the others will override it when they're paired, resulting in either type A or type B. But if you happen to inherit 2 O's, instructions will be expressed that make blood cells without the A or the B antigen. Because of these interactions, knowing both parents' blood types lets us predict the relative probability of their children's blood types. Why do blood types matter? For blood transfusions, finding the correct one is a matter of life and death. If someone with type A blood is given type B blood, or vice versa, their antibodies will reject the foreign antigens and attack them, potentially causing the transfused blood to clot. But because people with type AB blood produce both A and B antigens, they don't make antibodies against them, so they will recognize either as safe, making them universal recipients. On the other hand, people with blood type O do not produce either antigen, which makes them universal donors, but will cause their immune system to make antibodies that reject any other blood type. Unfortunately, matching donors and recipients is a bit more complicated due to additional antigen systems, particularly the Rh factor, named after the rhesus monkeys in which it was first isolated. Rh plus or Rh minus refers to the presence or absence of the D antigen of the Rh blood group system. And in addition to impeding some blood transfusions, it can cause severe complications in pregnancy. If an Rh negative mother is carrying an Rh positive child, her body will produce Rh antibodies that may cross the placenta and attack the fetus, a condition known as hemolytic disease of the newborn. Some cultures believe blood type to be associated with personality, though this is not supported by science. And though the proportions of different blood types vary between human populations, scientists aren't sure why they evolved, perhaps as protection against blood-borne diseases, or due to random genetic drift. Finally,
Different species have different sets of antigens. In fact, the 4 main blood types shared by us apes seem paltry in comparison to the 13 types found in dogs. Rh factor, which can be either present positive or absent negative. In general, Rh negative blood is given to Rh negative patients, and Rh positive blood or Rh negative blood may be given to Rh positive patients. Are you a universal donor? A universal recipient? The universal red cell donor has type O negative blood type. The universal plasma donor has type AB positive blood type. Blood transfusion. Blood transfusion is a medical term. It means a procedure used to transfer blood, or some products based on blood, from the circulatory system of one human to that of another human. Blood types are very important when a blood transfusion is necessary. In a blood transfusion, a patient must receive a blood type compatible with his or her own blood type. If the blood types are not compatible, red blood cells will clump together, making clots that can block blood vessels, causing a potentially fatal situation. Therefore, it is important that blood types can be matched before blood transfusions take place. In an emergency, type O blood can be given because it is most likely to be accepted by all blood types. However, there is still a risk involved. Why blood transfusions are performed? Loss of blood during surgery or from an injury or an illness. An inability to make enough blood. Some illnesses and treatments can harm the bone marrow's ability to make blood, e.g., chemotherapy decreases production of new blood cells. To prevent complications from an existing blood or bleeding disorder, such as sickle cell disease, thalassemia, or anemia caused by kidney disease, hemophilia, or von Willebrand disease. Preparing for a blood donation. If your child needs a blood transfusion, the doctor will speak to you about the procedure. If you have questions, be sure to ask. When you feel comfortable with the information and your questions have been fully answered, you'll be asked to sign an informed consent form. This form states that you understand the procedure and its risks, and you give permission for your child to have the blood transfusion. If the situation is not a life-threatening emergency, 2 tests will be done before the transfusion: blood typing and cross-matching. शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। एबीओ ब्लड ग्रुप्स को आखिर किसने डिस्कवर किया? इस बेसिक हिस्ट्री को समझे बिना आगे का पूरा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस थोड़ा अधूरा लगता है। और इसका क्रेडिट जाता है कार्ल लैंडस्टाइनर को, जिन्होंने 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। ये कोई छोटी डिस्कवरी नहीं थी। इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन एसेंशियली एक डेडली गैम्बल हुआ करता था, कभी पास कभी फेल। कार्ल लैंडस्टाइनर के इस एक ब्रेक थ्रू ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके बाद ट्रांसफ्यूजन्स एक्चुअली सेफ और क्लिनिकली पॉसिबल हो पाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एबीओ सिस्टम आखिर है क्या? बेसिकली ये ह्यूमन ब्लड का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ये इस बात पर बेस्ड होता है कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं, और ये प्रेजेंस या एब्सेंस कंप्लीटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। यही वो सॉलिड बायोलॉजिकल ग्राउंड वर्क है जो हर एक ब्लड ग्रुप को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है। इस माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड वर्क को और डीपली समझने के लिए एक स्पेसिफिक सिनेरियो लेते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में आखिर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? इसे ऐसे समझते हैं, ब्लड ग्रुप ए के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर नेचुरली ए एंटीजेंस होते हैं, लेकिन उनका प्लाज्मा, जो इन सेल्स को कैरी करने वाला लिक्विड है, उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। यही यूनिक बैलेंस इन ब्लड सिस्टम्स को इतना स्पेसिफिक बनाता है। सेल सरफेस एंटीजेंस और प्लाज्मा एंटीबॉडीज का ये ऑपोजिट लेकिन परफेक्ट रिलेशनशिप समझना आगे के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जब एंटीबॉडीज और एंटीजेंस
इतने स्पेसिफिक होते हैं तो मेडिकल प्रोफेशनल्स इनको लैबोरेटरी में आखिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यहाँ एंट्री होती है एंटी सेरा की। तो सवाल ये उठता है, एग्जैक्टली व्हाट आर एंटी सेरा यूज्ड फॉर? लैब लेवल पर इन माइक्रोस्कोपिक्स को टेस्ट करने का एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस है। सबसे पहले एक ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इस सैंपल में स्पेसिफिक लैबोरेटरी एंटीसिरा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एंटीसिरा बेसिकली स्पेसिफिक टेस्टिंग फ्लूइड्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी नोन एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। इन्हें ऐड करने के बाद विजिबल क्लम्पिंग यानी सेल्स का आपस में जुड़कर गुच्छे बनाना केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। इन्हीं क्लम्पिंग पैटर्न्स को एनालाइज करके एग्जैक्ट ब्लड टाइप की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। अब एक कंप्लीटली ऑपोजिट और यूनिक बायोलॉजिकल सिनेरियो के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल बिना किसी एंटीजेंस के होते हैं? और इस खास ब्लड ग्रुप को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं ब्लड ग्रुप ओ में। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इनके रेड ब्लड सेल्स पर कोई भी ए या बी एंटीजेंस नहीं होते। इनका सेल सरफेस लिटरली एक ब्लैंक कैनवस की तरह क्लियर होता है। लेकिन इनके प्लाज्मा में दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि इन रेड ब्लड सेल्स पर कोई एंटीजन ही नहीं होता जो रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज को ट्रिगर करे, इसे सेफली किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि मेडिकल फील्ड में इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इन सारे बेसिक बायोलॉजिकल रूल्स को क्लियर करने के बाद सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है। ब्लड ग्रुप्स की इनकम्पैटिबिलिटी का आखिर क्या अर्थ है? अगर किसी ट्रांसफ्यूजन के दौरान इन मैचिंग रूल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा? इसका रिजल्ट काफी एक्सट्रीम हो सकता है। अगर कंपैटिबल मैच होता है तो डोनर सेल्स सेफली इंटीग्रेट हो जाते हैं और ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहता है। लेकिन अगर इनकम्पैटिबल मैच हो गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इंस्टेंटली उन फॉरेन एंटीजेंस पर अटैक कर देता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज उन नई सेल्स को खतरा समझकर डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे डेंजरस क्लम्पिंग शुरू हो जाती है। ये इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली बॉडी का अपना एक पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ये प्रूव करता है कि ये बायोलॉजिकल मैचिंग रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना कितना क्रूशियल है। तो इन सभी माइक्रोस्कोपिक रूल्स, एंटीजेंस और इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब उस मेन इंजन पर फोकस करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को एक्चुअली पावर करता है, द हार्ट। यहाँ माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री से सीधे मैक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हार्ट को सिर्फ एक रेगुलर ऑर्गन कहना थोड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड वाइटल मस्कुलर पंप है। यही वो रिलेंटलेस मैकेनिकल फोर्स है जो इन ब्लड सेल्स, माइक्रोस्कोपिक एंटीजेंस और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज के एक कंटिन्यूअस और एक्सट्रीमली प्रिसाइज फ्लो को ड्राइव करती है। बिना इस मस्कुलर पंप के नॉन स्टॉप एक्शन के एबीओ सिस्टम और ब्लड कंपैटिबिलिटी का कोई भी फंक्शन टेक्निकली मूव ही नहीं कर सकता। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट ये निकल कर आता है, ह्यूमन बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कंटिन्यूअसली इस परफेक्ट कंपैटिबल ब्लड फ्लो पर डिपेंड करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि हार्ट, एक अकेला मस्कुलर ऑर्गन, इस लेवल की प्रिसाइज सर्कुलेशन और इतने कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फ्लूइड डायनामिक्स को हर एक सेकेंड बिना रुके कैसे मेंटेन करके रखता है। यही वो फैसिनेटिंग राज है जो आगे कार्डियक मैकेनिक्स की इस अमेजिंग दुनिया को और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है। In this video, we're going to start off by looking at what the circulatory system is and see why most mammals like ourselves have a double circulatory system. Then we'll take a closer look at the heart and cover the names of the different chambers and vessels. Now, the circulatory system, which is also sometimes called the cardiovascular system, is an example of an organ system, which means that it's made up of a group of organs that work together to perform a common function. In this case, those organs are the heart, the blood vessels, and the blood. And the role they're performing is to transport substances around the body. More specifically, the blood is the fluid which carries all of those substances, such as oxygen, nutrients, cells, and waste products. Then the blood vessels hold the blood and direct it around the body. And the heart pumps the blood to ensure that it keeps flowing through the vessels. In this video, we're going to focus on the heart.
but we'll cover the blood and blood vessels in other videos. So first of all, why do we call it a double circulatory system? Well, basically, it's because it contains two separate circuits. There's this top one, called the pulmonary circuit, where blood flows from the heart around to the lungs and then back to the heart again. And then there's the systemic circuit, where the blood flows from the heart around to all of our body tissues, like our muscles, brain, liver, and so on, and then flows back to the heart. So to put all of that together, blood's pumped from the heart, around the lungs and back to the heart, and then it's pumped around the body and back to the heart. And that process keeps repeating and repeating. If we take a closer look at the heart now, this is an organ, and you can basically think of it as a big muscular pump. Inside the heart are four chambers. These two at the top are called atria, and these two on the bottom are called the ventricles. Then in between the atria and ventricles, on either side are the atrioventricular valves, which ensure that blood only flows in one direction, from the atria into the ventricles. Now, whenever you look at an image of the heart, like this one, it's as if the heart belongs to another person who's looking at you front on. So when we label the left and right side of the heart, it's actually their left and their right that's important, not ours. This means that the left side of the heart is over here on our right, and the right side of their heart is over here on our left. So just remember that the left and right seem to be the wrong way around, but this is why. So putting that together, the four chambers are the right atrium and the right ventricle, with the right atrioventricular valve between them, and then the left atrium and the left ventricle, with the left atrioventricular valve between them. Also, you might notice on some diagrams that the left ventricle has a thicker muscular wall than the right ventricle. This is because the left ventricle has to pump blood all the way around the body, whereas the right ventricle only has to pump it to the lungs, which are much closer. The next thing we need to look at is all of the blood vessels that enter and leave the heart. In your exam, you probably won't get a diagram this complex. Instead, you'll be given a simpler one like this. And you'll often see the whole circulatory system represented like this too. And you'll need to be able to identify each of the structures and blood vessels. So starting here, let's label each part as the blood travels around. This first blood vessel is the vena cava, which is the body's largest vein, and is where deoxygenated blood flows from the body into the heart. The deoxygenated blood is now here in the right atrium, and as the right atrium fills with blood, it contracts and pumps the blood down here into the right ventricle. The right ventricle then also contracts and pumps the blood into this blood vessel called the pulmonary artery, which carries the blood to the lungs where it can become oxygenated. The blood then leaves the lungs via the pulmonary vein, which carries it here to the left atrium. Once it's full, the left atrium contracts, pumping the blood down into the left ventricle, which after a short delay then also contracts and pumps the blood into this blood vessel, the aorta, which is the largest artery in the body. The blood from the aorta then travels around the body to our tissues, where it exchanges gases and nutrients, and then comes back to the heart via the vena cava to restart the cycle all over again. One last thing before we finish is that the heart muscle itself also needs its own supply of oxygenated blood. And it gets this from small arteries that branch off the aorta called coronary arteries.
These vessels encircle the heart and make sure the muscle tissue gets all the oxygen and nutrients that it needs to keep contracting. If these coronary arteries get blocked though, then it could lead to coronary artery disease or a heart attack. Ever wonder what causes a thump-thump sound of your heartbeat? Believe it or not, it's all to do with the valves we learnt about in these videos. The valves work together as partners, ensuring that oxygenated blood is delivered throughout your whole body. After all, isn't this the whole point of having a heart? The sound of your heart beating can be attributed to your valves closing, and always in specific pairs. So a quick recap. Separating the atria from the ventricles are the tricuspid and bicuspid valves. The pulmonary valve and the aortic valve ensure that deoxygenated blood and oxygenated blood leave the heart entirely without any backflow. This beautiful system sees that both the tricuspid and bicuspid valve are closed when the ventricles, both left and right, contract. This contraction forces blood out of the heart through the pulmonary arteries and aorta. In fact, the first thump that you feel is the sound of the tricuspid and bicuspid valves closing simultaneously. So, during systole, the first half of your heartbeat, the tricuspid and bicuspid valves are closed, but the pulmonary and aortic valves are open. Once the ventricles relax, the pulmonary and aortic valves close, causing the second thump of your heartbeat. When the pulmonary and aortic valves are closed, the tricuspid and bicuspid valves automatically open. During diastole, as this period is called, both oxygenated and deoxygenated blood fills into the heart. So how many times does your heart do this in a minute? The average heart rate for a young adult varies, depending on age, physical size, genetics, and activity. Usually it's in the range of 60 to 100 heartbeats per minute. The fitter you are, the lower your resting heart rate is likely to be. An athlete may have a resting heart rate closer to 40 beats a minute. After each heartbeat, a pressure wave passes along your arteries, which causes the arterial walls to bulge and then contract. These pulses, as they are called, can be felt at various points throughout your body. If you take the index and middle finger of your right hand and place them on the inside of your left wrist, leading to your thumb, you can feel a pulse. A strong pulse can also be felt at the top of your neck. Although you cannot quantitatively measure the force of your pulse, you can do so for the overall force exerted against the arterial walls by your blood. This is called blood pressure. Usually your blood pressure is given as two numbers like this. These numbers represent the forces exerted during systole and diastole, known as systolic pressure and diastolic pressure. The systolic pressure is quoted before the diastolic pressure. If you lined up all the blood vessels in your body, they'd be 95,000 kilometers long. And every day, they carry the equivalent of over 7,500 liters of blood. Though that's actually the same 4 or 5 liters recycled over and over, delivering oxygen and precious nutrients like glucose and amino acids to the body's tissues. All that blood exerts a force on the muscular walls of the blood vessels. That force is called blood pressure.
and it rises and falls with the phases of the heartbeat. It's highest during systole, when the heart contracts to force blood through the arteries. This is your systolic blood pressure. When the heart is at rest between beats, blood pressure falls to its lowest value, the diastolic pressure. A typical healthy individual produces a systolic pressure between 90 and 120 millimeters of mercury, and diastolic pressure between 60 and 80. Taken together, a normal reading is a bit less than 120/80. The blood traverses the landscape of the body through the pipes of the circulatory system. In any plumbing system, several things can increase the force on the walls of the pipes: the properties of the fluid, extra fluid, or narrower pipes. So if the blood thickens, a higher pressure is needed to push it, so the heart will pump harder. A high salt diet will lead to a similar result. The salt promotes water retention, and the extra fluid increases the blood volume and blood pressure. And stress, like the fight or flight response, releases hormones like epinephrine and norepinephrine that constrict key vessels, increasing the resistance to flow and raising the pressure upstream. Blood vessels can usually handle these fluctuations easily. Elastic fibers embedded in their walls make them resilient. But if your blood pressure regularly rises above about 140/90, what we call hypertension, and stays there, it can cause serious problems. That's because the extra strain on the arterial wall can produce small tears. When the injured tissue swells up, substances that respond to the inflammation, like white blood cells, collect around the tears. Fat and cholesterol floating in the blood latch on too, eventually building up to form a plaque that stiffens and thickens the inner arterial wall. This condition is called atherosclerosis, and it can have dangerous consequences. If the plaque ruptures, a blood clot forms on top of the tear, clogging the already narrowed pipe. If the clot is big enough, it can completely block the flow of oxygen and nutrients to cells downstream. In vessels that feed the heart, that will cause a heart attack when oxygen-deprived cardiac muscle cells start to die. If the clot cuts off blood flow to the brain, it causes a stroke. Dangerously clogged blood vessels can be widened by a procedure called an angioplasty. There, doctors thread a wire through the vessel to the obstructed site, and then pass a deflated balloon catheter over the wire. When the balloon is inflated, it forces the passageway open again. Sometimes a rigid tube called a stent is placed in the vessel to help hold it open, letting the blood flow freely to replenish the oxygen-starved cells downstream. Staying flexible under pressure is a tough job for arteries. The fluid they pump is composed of substances that can get sticky and clog them. And your typical healthy heart beats about 70 times a minute, and at least 2.5 billion times during an average lifetime. That may sound like an insurmountable amount of pressure, but don't worry. Your arteries are well suited for the challenge. बिना किसी डिले के सीधे इन सवालों पर आते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सीक्रेट्स को खोलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वेंट्रिकल्स की दीवारें एट्रिया की दीवारों के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा मस्कुलर क्यों होती हैं? इसका मेन रीजन उस दूरी में छिपा है जहां ब्लड को ट्रैवल करना होता है। इस इमेज को देखिए।
हार्ट का डिज़ाइन अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एट्रिया का काम बस ब्लड को थोड़ा सा पुश करके ठीक नीचे अपने एडजेसेंट वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है। इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगता। लेकिन वेंट्रिकल्स, उन्हें ब्लड को पूरे फोर्स के साथ हार्ट से बाहर, लंग्स और पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पंप करना होता है। जाहिर सी बात है, इतने हैवी पंपिंग के लिए थिक और पावरफुल मस्कुलर वॉल्स तो चाहिए ही होंगी। अब पूरी तरह से सिर्फ वेंट्रिकल्स पर फोकस करते हैं। हमारा अगला सवाल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की मसल थिकनेस के आपस में कंपैरिजन पर है। दोनों ही वेंट्रिकल्स हैं, फिर भी इनकी बनावट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? रीजन बड़ा ही सिंपल है, इन दोनों का वर्कलोड। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वाले से काफी ज्यादा थिक होता है, क्योंकि इसे बहुत हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एओर्टा के थ्रू ब्लड को सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक, यानी पूरी बॉडी में पुश करना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल को बस थोड़ी ही दूर अपने पड़ोसी लंग्स तक ब्लड भेजना होता है, जहां प्रेशर भी काफी कम होता है। तो जहां काम ज्यादा, वहां मसल्स ज्यादा थे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये देखते हैं कि ब्लड वेसल्स की हमारी समझ कैसे और क्लियर होती है, खासकर पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन के इस बहुत ही क्लासिक बायोलॉजिकल एक्सेप्शन पर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि नॉर्मली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन से यानी लंग्स से सीधा वापस आ रही है, और क्योंकि ये सीधे लंग्स से ब्लड वापस ला रही है तो डेफिनेटली ये अपने साथ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर आती है, जो सीधा लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। अब वापस आने वाले ऑक्सीजन पुअर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो की बात करते हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वेसल्स हैं जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधे राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। इस स्लाइड में जो प्रोमिनेंट नीली वेसल्स दिख रही हैं, वही इसका आंसर है। सुपीरियर वेना कावा हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से, और ये दोनों जायंट वेसल्स अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे इसी राइट साइड वाले चेंबर में एम्प्टी कर देती हैं। हार्ट के चेंबर से आगे बढ़ते हुए अब इसके इंटरनल गेटवेज पर आते हैं। अगला सवाल ट्राइकस्पिड वॉल्व की एग्जैक्ट लोकेशन और इसके क्रिटिकल फंक्शन के बारे में है। नाम से ही पता चलता है, ट्राई मतलब 3 फ्लैप्स। ये बिल्कुल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होता है। इसका बेसिक फंक्शन एक वन वे सिक्योरिटी गेट की तरह काम करना है। जब ब्लड नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वॉल्व तुरंत बंद हो जाता है, ताकि भारी प्रेशर में भी ब्लड वापस ऊपर एट्रियम में ना चला जाए। इसी स्ट्रक्चरल डिस्कशन को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं। अगला सवाल एक जनरल बायोलॉजिकल लेवल पर है। आखिर कस्पिड वाल्व्स होते क्या हैं? कस्पिड वाल्व्स में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही आते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कस्प्स कहते हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये कस्प्स बहुत ही मजबूत रेशेदार डोरियों से एंकर्ड होते हैं, जिन्हें कॉर्डे टेंडिने कहा जाता है। ये कॉर्ड्स बिल्कुल पैराशूट की स्ट्रिंग्स की तरह काम करती हैं, जो वाल्व को भयंकर फ्लूइड प्रेशर के कारण उल्टी दिशा में पलटने से रोकती हैं। ओके, तो कस्पिड वाल्व्स के अलावा हार्ट में एक और टाइप के वाल्व्स होते हैं जिनका जिक्र इस कंसेप्ट चेक में है। सवाल है कि सेमील्यूनर वाल्व्स का रोल क्या होता है? सेमी लूनर का बेसिकली मतलब होता है आधा चांद या हाफ मून। ये वॉल्व्स हार्ट के फाइनल एग्जिट चेक पॉइंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे लोकेटेड होते हैं। जैसे ही ब्लड हार्ट से बाहर इजेक्ट होता है, ये खुल जाते हैं और तुरंत बाद एकदम स्नैप शट हो जाते हैं, ताकि ग्रेविटी और आर्टीरियल प्रेशर की वजह से ब्लड वापस रेस्टिंग वेंट्रिकल्स में नीचे ना गिर जाए। अब इंटरनल मैकेनिज्म से बाहर आकर हार्ट के एक्सटर्नल ज्योग्राफी देखते हैं। यहाँ एक एक्सटर्नल फीचर कोरोनरी सल्कस के बारे में भी पूछा गया है। यहाँ इस एक्सटर्नल एनाटॉमी को ध्यान से देखिए। कोरोनरी सल्कस, जिसे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं, हार्ट के सरफेस पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिप्रेशन है जो एक बेल्ट की तरह घूमता है। ये लिटरली अपर एट्रिया को लोअर वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक बॉर्डर लाइन नहीं है, ये मेजर कोरोनरी ब्लड वेसल्स को रूट करने का एक पैसेज भी है जो खुद हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। चलिए
अब हार्ट के अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। हार्ट बीट के टाइम जो वो क्लासिक लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिकल रीजन क्या है? ये साउंड्स पूरी तरह से मैकेनिकल ओरिजिन के होते हैं। पहला थोड़ा हैवी लब साउंड तब आता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर कस्पिड वॉल्स एकदम फोर्स के साथ आपस में बंद होते हैं, और उसके तुरंत बाद जो थोड़ा शार्प डब साउंड आता है वो सेमिलूना वॉल्स के आर्टीरियल प्रेशर के अगेंस्ट स्नैप शट होने की आवाज है। आसान भाषा में कहें तो ये बस दरवाजों की जोर से बंद होने की आवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूअस रिदमिक बायोलॉजिकल सीक्वेंस को डिफाइन करने को कहा गया है, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल बेसिकली सिर्फ एक कंप्लीट हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। ये उन सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स का सीक्वेंस है जो एक धड़कन में होते हैं। इस साइकिल में मस्कुलर कंट्रैक्शन और रेस्टिंग रिलैक्सेशन के कंटिन्यूअस फेजेस होते हैं, जिनकी वजह से ब्लड बहुत ही एफिशिएंटली हमारी पूरी बॉडी में पंप हो पाता है। फाइनली उन्हीं ऑपरेशनल फेजेस को और फर्मली क्लियर करने के लिए हमें सिस्टोल और डायस्टोल की कॉन्क्रीट डेफिनेशन देनी है। ये एसेंशियली हार्ट की ड्युअलिटी को दिखाता है। सिस्टोली एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन फेज है जहां ब्लड फोर्स के साथ चेंबर से बाहर रिजेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ डायस्टोल वो वाइटल रेस्टिंग फेज है जहां हार्ट मसल प्रॉपर्ली रिलैक्स करती है और चेंबर्स नए ब्लड से वापस भरने लगते हैं। स्क्वीज और रिलैक्स का एक नेवर एंडिंग लूप। इन सारे इंट्रिकेट एनाटॉमिकल सवालों को आंसर करने के बाद सच में ये पूरा सिस्टम एक मिरेकल लगता है। जरा सोचिए, इतने कॉम्प्लेक्स वॉल्व्स, कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग प्रेशर्स और सिस्टोल डायस्टोल के साइकिल्स, एक अकेला सिंगल मस्कुलर ऑर्गन इस प्रिसाइज अनइंटरप्टेड रिदम को एक पूरी ह्यूमन लाइफ टाइम तक बिना रुके कैसे सस्टेन कर लेता है। In our last video, we introduced the circulatory system and saw how the heart acts as the system's pump. In this video, though, we'll take a closer look at the blood vessels, specifically the arteries, capillaries, and veins. To quickly summarize, the arteries carry blood away from the heart. The capillaries exchange nutrients and oxygen with the tissues, and veins carry the blood back to the heart. As we take a closer look at each, the key thing to notice is how the structure of each type of vessel is related to its function. As arteries carry blood directly from the heart, the blood inside them is going to be at really high pressures, because it's just been pumped out of the ventricles. In order to bear these high pressures, the arteries need to be both strong and elastic. And to achieve this, they have a thick layer of muscle tissue to keep them strong, and a thick layer of elastic tissue so that they can stretch and recoil. These two layers, though, mean that the wall of the artery is quite thick when compared to its lumen, which is what we call the hole or space in the middle of the vessel. Once the arteries have transported the blood to the different parts of the body, it enters the capillaries. These vessels are really small and come into close contact with all of the cells in our body. Their role is to exchange substances with our cells, giving them useful nutrients and oxygen, and taking away waste products like carbon dioxide. If we take a closer look at a single capillary, we can see how they're adapted to this function. For example, their walls are only a single cell thick, and they're also permeable, which means that substances can easily diffuse through them. Because they're so tiny, the lumen of an individual capillary is also tiny. But there are so many of them that their total cross-sectional area, which is just the area of all the capillaries added together, is actually huge, far higher than for arteries. This means that the pressure of the blood is much lower than in the arteries, and so it flows more slowly, which gives the blood time to exchange things with the tissues. Finally, these tiny capillaries start to join up into larger vessels called veins, which transport the blood back to the heart. Veins are relatively large, with by far the biggest lumens of any blood vessels. They also have relatively thin walls, with only small layers of elastic fibers and smooth muscle.
This works fine though, because the blood that they carry is at very low pressures, so the walls don't need to be very strong. The important thing to remember about veins though is that they have valves, which prevent blood from flowing backwards, ensuring that it always flows towards the heart. Before we finish, let's quickly cover how to calculate the rate of blood flow. A typical question could look something like this. 2,560 ml of blood passes through the aorta, which is the big artery that leaves the heart, in 8 minutes. Calculate the rate of blood flow through the aorta in milliliters per minute. So in a question like this, we would just divide how much blood has flowed, so 2,560, by the time it took, so 8 minutes, which gives us 320 milliliters per minute. And that's all for the blood vessels. If you haven't seen our other videos on the heart and the blood yet, we put the links for those in the description below. Otherwise, cheers for watching, and we'll see you next time. The human heart operates on a double circulation system, ensuring efficient oxygenation of blood and delivery of nutrients throughout the body. Let's begin with pulmonary circulation, the first part of the double circulation system. The deoxygenated blood returns to the heart from the body's tissues through the superior and inferior vena cava, entering the right atrium. From the right atrium, blood flows through the tricuspid valve into the right ventricle. The right ventricle contracts, pumping the deoxygenated blood through the pulmonary valve and into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs, where it undergoes gas exchange. Carbon dioxide is removed, and oxygen is absorbed. Oxygenated blood returns to the heart via the pulmonary veins, entering the left atrium. From here starts the systemic circulation, the second part of the double circulation system. Oxygenated blood from the left atrium passes through the mitral valve into the left ventricle. The left ventricle contracts, pumping oxygen-rich blood through the aortic valve and into the aorta, the body's largest artery. From the aorta, oxygenated blood is distributed to all body parts through smaller arteries, arterioles, and eventually capillaries. In the capillaries, oxygen and nutrients are delivered to tissues, and waste products, including carbon dioxide, are removed. Deoxygenated blood, laden with waste products, returns to the heart via venules and veins, ultimately entering the right atrium to begin the pulmonary circulation process again. And there you have it, the double circulation of the human heart. This complex system ensures efficient blood oxygenation and delivery of nutrients throughout the body, supporting overall health and function. A portal system is an arrangement of blood vessels such that blood passes from a capillary bed into larger blood vessels and then into another capillary bed. Ordinarily, blood flows from a capillary bed into the venous system and eventually back into the heart. In the case of a portal system, blood flows from a capillary bed into the venous system, but then flows through another capillary bed before returning to the heart. When blood must pass through more than one separate capillary bed, a portal system exists. In the case of the liver, the two different capillary beds of the portal system are the capillaries of the gastrointestinal tract and the capillaries in the liver. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो पोर्टल सर्कुलेशन को समझने के लिए
हमने एनाटॉमी के 3 सेगमेंट्स बना लिए हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है लिवर, सेकंड सेगमेंट हमारा जनरल सर्कुलेशन है एंड द लास्ट सेगमेंट इज जीआई ट्रैक्ट। हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है, जो हमारे एओर्टा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा और इलियक आर्टरीज में ब्रांचेस बन जाती हैं। एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच होती है जिसे हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। ये हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में लेकर जाती है ताकि लिवर अपनी सेलुलर मेटाबॉलिज्म कर सके। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो लिवर इसे हेपेटिक वेन के अंदर ड्रेन कर देता है और ये हेपेटिक वेन आगे जाकर इंफीरियर वेना कावा में अपना ब्लड ड्रेन करता है और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में। तो ये हमारे लिवर की सर्कुलेशन है जिसमें आर्टरी और वेन होती है। इसके अलावा हमारे लिवर में एक तीसरी टाइप की सर्कुलेशन भी होती है जिसे हम पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ से ओरिजिनेट होती है। पोर्टल सर्कुलेशन हमारे जीआई ट्रैक्ट से ओरिजिनेट होती है, जिसमें हमारा स्टमक और हमारा जीआई ट्रैक्ट, पूरा जीआई ट्रैक्ट आता है। यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये हमारे लिवर में जाकर एंड होती है। इसका फंक्शन होता है कि हमारे जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना जीआई ट्रैक्ट से लिवर तक। हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हम इंजेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में नहीं डाले जाते हैं, वो हमारे पहले लिवर में भेजे जाते हैं और लिवर का काम होता है उन्हें असेस करना कि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। जो यूजफुल चीजें होती हैं उसे हमारे जनरल सर्कुलेशन में इंफीरियर वेना कावा में थ्रू हेपेटिक वेन डाल दिया जाता है और जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं उन्हें एक्सक्रीट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये है हमारे पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन की डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन का क्लासिकल साइन होता है ईसोफेजियल वेरिसिस। और ईसोफेजियल वेरिसिस में हमें ब्लड स्टेन्ड वॉमिटिंग होती है, क्योंकि ईसोफेगस में वेरिसिस बन जाते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद ब्रिक रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। तो ये है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में। हमने पढ़ा पोर्टल सर्कुलेशन कहां से ओरिजिनेट होती है और इसका फंक्शन क्या है। अब हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता है। हम ये भी जानते हैं कि यह जबरदस्त प्रेशर से फ्लो करता है। ऐसे केस में जब ब्लड सेल्स आगे की दिशा में जा रहे होते हैं तो कुछ मात्रा में फ्लूइड कैपिलरी वॉल्स द्वारा बाहर निकल जाता है। हम इस वीडियो में इस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिनसे ब्लड बेहद तेजी से फ्लो करता है। जब सेल्स आगे बढ़ते हैं तो जो फ्लूइड इन सेल्स को कैरी करता है वो भी तेजी से ट्रैवल करने लगता है। इसके कारण कुछ फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से लीक हो जाता है। लेकिन इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। सरल भाषा में लिम्फ प्लाज्मा माइनस कुछ प्रोटीन्स होता है। लेकिन फिर ये लिम्फ ब्लड कैपिलरी से बाहर कहां जाएगा? क्या ये शरीर में घूमता रहेगा? खैर, ऐसा नहीं है। ब्लड कैपिलरीज के बाहर खास कैपिलरीज होती हैं जो इस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं। इन्हें लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। और आपको क्या लगता है कि ये लिम्फ कैपिलरीज इसे आगे कहां लेकर जाएंगी? लिम्फ कैपिलरीज को आगे लिम्फ वेसल्स द्वारा गाइड किया जाता है। ये लिम्फ वेसल्स बड़े वेन्स में खुलती हैं। हमें इस लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों है? इस सिस्टम का मुख्य काम होता है सभी फ्लूइड्स जो कैपिलरीज द्वारा बाहर निकाल दिए गए थे उन्हें ब्लड में वापस लाना। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कुछ सब्सटेंसेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब किए फैट्स। अंत में लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में भी बहुत जरूरी रोल होता है। ये इन्वेडर्स को फंसाता है और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाता है जहां ये नष्ट किए जाते हैं। लिम्फ नोड्स गांठ जैसे होते हैं जो गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये शरीर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग जगहों पर मौजूद होते हैं। इनका मुख्य फंक्शन है इन्वेडर्स को मारना
जो कि लिम्फ द्वारा पकड़े और लाए गए हैं। ये हमारे शरीर को सेल्यूलर वेस्ट्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से साफ रखने में मदद करता है। ये था जानवरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। लिम्फ के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन बुक में कुछ और भी फंक्शंस दिए गए हैं, उनको भी क्लियरली समझ लेते हैं जिससे कोई पॉइंट ना रह जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमें क्लियर हैं, पर आज हर एक एक्स्ट्रा फंक्शन और उसकी सिस्टेमिक सिग्निफिकेंस को क्लियरली अनपैक करेंगे ताकि इस टॉपिक पर एब्सोल्यूट मास्टरी हासिल हो सके। बुक में दिए गए हर एक फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे इन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। सबसे पहले दो सबसे बेसिक और क्रूशियल फंक्शंस के बीच का कॉन्ट्रास्ट क्लियरली समझना जरूरी है। एक तरफ लिम्फ एक डिलीवरी फ्लीट की तरह काम करता है। ये टिश्यू सेल्स तक वाइटल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दूसरी तरफ एग्जैक्टली सेम टाइम पर ये एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है। ये उन्हीं टिश्यू सेल से नाइट्रोजनस वेस्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ब्लड में पास कर देता है। बेसिकली एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स लाना और दूसरी तरफ से वेस्ट ले जाना। डाइजेशन में भी लिम्फ का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल होता है। एक स्पेसिफिक टर्म पर यहाँ फोकस करते हैं, लैक्टियल्स। इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विली कहते हैं, और वहाँ ये लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन है डाइजेस्टेड फैट्स, स्पेसिफिकली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को डायरेक्टली अब्जॉर्ब करना। तो जब भी फैट रिच फूड कंज्यूम किया जाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम ही होता है जो उस फैट को प्रोसेस करने में हेवी लिफ्टिंग कर रहा होता है। ये सिस्टम सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता, बल्कि बॉडी की एक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्लियरली डिफाइन होता है। ये लिम्फ के अंदर मौजूद स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इनकी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बॉडी में एंटर करने वाले हार्मफुल पैथोजेंस यानी जर्म्स को हंट करना और उन्हें एक्टिवली डिस्ट्रॉय करना, ये हमारी इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। सो एक और क्रूशियल पॉइंट ये है कि लिम्फ एक बैलेंसर की तरह भी फंक्शन करता है। ये होम्योस्टैसिस यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में प्राइमरी रोल प्ले करता है। पहला, ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स के कॉन्सेंट्रेशन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रहे, और दूसरा, ये ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर को इक्वलाइज यानी पूरी बॉडी में सभी जगह बराबर रखने का काम भी करता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस सिनेरियो सामने आता है। सोचिए क्या होगा अगर ये सिस्टम अचानक ब्रेकडाउन हो जाए। स्पेसिफिकली अगर ये फ्लूइड जो टिश्यूज में गया है वो वापस ब्लड में रिटर्न ही ना हो, तो एंड रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? ये पॉइंट सीधे इस टेक्स्ट के दूसरे हिस्से की तरफ लीड करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लेट्स सी कि ये चेन रिएक्शन आखिर कैसे बिल्ड होती हैं। जब लिम्फेटिक रिटर्न फेल हो जाता है तो एक कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्टेप 1, फ्लूइड वापस ब्लड में आना कंप्लीटली बंद हो जाता है। इसका रिजल्ट स्टेप 2, बॉडी में ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम लगातार ड्रॉप होने लगता है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत डेंजरस हो सकता है। और स्टेप 3, क्योंकि ब्लड कैपिलरी से कंटिन्यूसली फ्लूइड लीक होता रहता है, वो फ्लूइड टिश्यूज में ड्रामेटिकली जमा होने लगता है। इस वजह से टिश्यू स्वेल हो जाते हैं। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि ये रिटर्न मैकेनिज्म लाइफ सस्टेन करने के लिए कितना वाइटल है। और इस लॉजिस्टिक प्रोसेस का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ हाईलाइट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम ना सिर्फ एक्सेस फ्लूइड को बल्कि उन वाइटल प्रोटीन्स को भी कॉन्स्टेंटली ब्लड में वापस रिटर्न करता है। अगर ये सिस्टम काम करना बंद कर दे तो ब्लड अपने जरूरी प्रोटीन कंपोनेंट्स पूरी तरह लूज कर देगा। ये बेसिकली इंटरनल डिप्लीशन को प्रिवेंट करने का एक अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एंड दिस ब्रिंग्स एवरीथिंग टू अ परफेक्ट समरी। बुक से ली गई ये पावरफुल कोट सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर देती है। इन सारे फंक्शंस का अल्टीमेट सिस्टेमिक गोल आखिर है क्या? ब्लड की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना। इस डेलिकेट ऑस्मोटिक बैलेंस के बिना ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच जरूरी मटेरियल्स का एक्सचेंज फैसिलिटेट हो ही नहीं सकता। तो जब ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन के बारे में बात होती है तो इस हिडन प्लम्बिंग सिस्टम की अहमियत को ईजिली समझा जा सकता है। क्या हमारे टिश्यूज बिना इस कांस्टेंट फ्लूइड मैनेजमेंट के प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाते? बिल्कुल नहीं। इन पॉइंट्स को क्लियरली समझने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम की पूरी पिक्चर अब परफेक्टली क्लियर हो जाती है। Question 1. Why is spleen called blood reservoir? Question 2. Name lymphatic organs. Question 3. What are lacteals? Question 4. Lymph component destroying pathogens. और Question 5. Tonsils and adenoids क्या होते हैं? अब बिना टाइम वेस्ट किए हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Why is spleen called a blood reservoir?
स्प्लीन एक काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक ऑर्गन है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन है एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को स्टोर करना। बेसिकली इमरजेंसी के वक्त जैसे किसी सिवियर ब्लीडिंग के टाइम स्प्लीन इस स्टोर्ड ब्लड को बॉडी में रिलीज कर देता है, बस इसलिए इसे ब्लड रिजर्वॉयर कहा जाता है। सिंपल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, नेम लिम्फेटिक ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन एक ब्रॉडर मैप डिमांड करता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए इन बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स में आते हैं हमारा स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और पूरी बॉडी में फैले हुए लिम्फ नोड्स। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक कंप्लीट नेटवर्क बनाते हैं। इसके बाद हम लिस्ट के 5वें क्वेश्चन पर आते हैं जो इन्हीं मैक्रोस्कोपिक ऑर्गन से सीधा जुड़ा है। व्हाट आर टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स? ये बहुत ही क्रूशियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। टॉन्सिल्स गले के ठीक पीछे होते हैं और एडेनॉइड्स नाक के पीछे। इनका मेन काम एक फिल्टर की तरह एक्ट करना है जो पैथोजेंस को बॉडी में एंटर होने से इमीडिएटली ब्लॉक करते हैं। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन और डेफिनेशन नोट करना काफी जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर लैक्टियल्स? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो लैक्टियल्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं। इनका प्राइमरी काम है डाइटरी फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना। तो ये इस सिस्टम का एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल हिस्सा हो गया। विच कंपोनेंट ऑफ लिम्फ डिस्ट्रॉयज हार्मफुल पैथोजेंस? ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ वेसल्स का पैसिव नेटवर्क नहीं है बल्कि एक हाईली एक्टिव डिफेंस सिस्टम है। जब बॉडी की प्रोटेक्शन की बात आती है तो इन पैथोजेंस यानी हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन 4 का एग्जैक्ट आंसर क्या है? ये आंसर छिपा है हमारे स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स में जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये लिम्फोसाइट्स लिम्फ फ्लूइड के अंदर घूमते हैं और इन्हीं डेंजरस पैथोजेंस को ढूंढकर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। This video will understand how the spleen actually works in the body. The spleen is strategically located in the upper left quadrant of the abdomen, tucked safely behind the stomach. It's a key part of the lymphatic system, and it's so important that the body gives it a personal shield, the rib cage, for maximum protection. Let's see. Internal part of the spleen. It's divided into two main functional zones, white pulp and red pulp. First, the white pulp. Think of the white pulp as our body's personal security team. Inside, we find two cells, B cells and T cells. Whenever a pathogen tries to enter the bloodstream, these cells sense the threat immediately. They produce powerful antibodies to kill the pathogen before they can cause trouble. Next is the red pulp of the spleen, the recycle bin of our blood. It filters the blood, removes old or damaged red blood cells, and returns healthy ones to circulation. The broken cells are recycled, and their components like iron are reused to form new red blood cells, helping the body run smoothly. As you can see, the spleen is like a dual system engine. At the same time, it recycles old blood cells and destroys harmful pathogens. That's what makes the spleen one of the most unique and underrated organs in the human body. If this video helped you understand it better, hit the like button. एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड हमारे हेल्थ के बारे में लिटरली कितना कुछ रिवील कर सकती है। ब्लड स्मीयर को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करने का जो यूनिवर्सल मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको समझना एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है। ये मेडिकल साइंस का एकदम फंडामेंटल प्रोसेस है जिसे ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन और स्टेनिंग कहते हैं। किसी भी प्रिसाइज प्रोसीजर की तरह शुरुआत होती है राइट सेट ऑफ एसेंशियल मटेरियल से। क्लीनलीनेस और स्टेरिलाइज्ड टूल्स यहाँ सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक परफेक्ट स्मीयर का कैनवस सेट करने के लिए एग्जैक्टली 4 चीजें जरूरी हैं। 2 बिल्कुल क्लीन ग्लास स्लाइड्स, थोड़ा ब्लॉटिंग पेपर, स्पिरिट में सोक्ड कॉटन और ऑफ कोर्स एक थॉरली स्टेरिलाइज्ड नीडल। अब आती है एक्चुअल प्रिसिजन की बारी। सबसे पहले फिंगर को स्पिरिट वाले कॉटन से थॉरली स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर उस स्टेरिलाइज्ड नीडल से एक क्विक छोटा सा प्रिक करते हैं।
फिंगर को थोड़ा प्रेस करने पर ब्लड की पहली ड्रॉप बाहर आती है। बट हियर इज द कैच, एक बहुत ही क्रूशियल इंस्ट्रक्शन है कि इस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड को हमेशा वाइप ऑफ कर देना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टेप इंश्योर करता है कि ब्लड सैंपल में सरफेस लेवल की इम्प्योरिटीज या टिश्यू फ्लूइड्स मिक्स ना हो जाएं। फर्स्ट ड्रॉप को क्लियर करने के बाद नेक्स्ट एक्शन एकदम इमीडिएट होना चाहिए। फिंगर टिप को जेंटली स्क्वीज करके एक फ्रेश ब्लड ड्रॉप प्रोड्यूस करनी होती है। फिर इस फ्रेश ड्रॉप को एक क्लीन हॉरिजॉन्टल ग्लास स्लाइड के बिल्कुल राइट एज पर केयरफुली प्लेस कर दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है इस प्रोसीजर की रियल जियोमेट्री। 1 सेकेंड ग्लास स्लाइड लेके उसे इमीडिएटली उस फ्रेश ब्लड ड्रॉप के ऊपर रखा जाता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि इस सेकेंड स्लाइड को हॉरिजॉन्टल स्लाइड के साथ एग्जैक्टली 60 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए होल्ड करना है। ये प्रिसाइज 60 डिग्री एंगल ही एक परफेक्ट रीडेबल स्मीयर क्रिएट करने का एब्सोल्यूट सीक्रेट है। जैसे ही वो सेकेंड स्लाइड 60 डिग्रीज पर आती है, ब्लड नेचुरली उस वर्टिकल स्लाइड के मार्जिन के अलोंग स्प्रेड होने लगता है। ठीक इस एग्जैक्ट पॉइंट पर एक हाईली स्पेसिफिक फिजिकल मोशन की जरूरत होती है। उस वर्टिकल स्लाइड को हॉरिजॉन्टल स्लाइड के ऊपर पुश करना होता है, लेकिन स्मूथली, जेंटली बट क्विकली, एक सिंगल फास्ट स्वाइप में। इस जेंटल और क्विक पुश का रिजल्ट क्या होता है? एक परफेक्ट स्मीयरिंग एक्शन। ग्लास स्लाइड पर ब्लड की एक बहुत ही फाइन, इवन फिल्म फॉर्म हो जाती है। ये स्टेप इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना इस पतली लेयर के माइक्रोस्कोपिकली इंडिविजुअल सेल्स को आइसोलेट करना और उनकी डिटेल्ड स्टडी करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिजिकल स्मीयर रेडी होने के बाद प्रोसेस शिफ्ट होता है केमिकल फेज में। सबसे पहले इस फ्रेश स्मीयर को हवा में कंप्लीटली ड्राई होने दिया जाता है। एक बार ये सूख जाए तो इसे एक स्पेशलाइज्ड केमिकल, जिसे लीशमैन स्टेन कहते हैं, उसकी कुछ ड्रॉप्स से कवर कर देते हैं। ये स्टेनिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट सेल्स को कलर देकर हाईलाइट करने का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट केमिकल स्टेप है। इस केमिकल डेवलपमेंट में टाइमिंग इज एवरीथिंग। एग्जैक्ट साइंटिफिक टाइमिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लीशमैन स्टेन डालने के बाद प्रिसाइजली 2 मिनट्स, एग्जैक्टली 2 मिनट्स का वेट करना होता है। ये 2 मिनट पूरे होते ही एक्स्ट्रा स्टेन को ड्रेन ऑफ कर देते हैं और स्लाइड पर डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जाता है। अब आते हैं फाइनल फिनिशिंग टचेस पर। इस ग्लास स्लाइड को जेंटली रनिंग टैप वाटर के अंदर वॉश करना होता है, जिससे कि एक्सेस स्टेन कंप्लीटली निकल जाए। माइक्रोस्कोप लेंस के अंदर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले स्लाइड का एंटायरली ड्राई होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन को रूइन कर सकता है। और फाइनली द माइक्रोस्कोपिक रिवील। इस मैग्निफिकेशन लेवल पर ब्लड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाते हैं। उस लीशमैन स्टेन के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और छोटे प्लेटलेट्स के बीच बहुत इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। हर एक सिंगल सेल का डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और उसका कलर कॉन्ट्रास्ट एकदम ब्रिलियंटली उभर कर दिखता है।